Hello students, welcomes all of you in this online platform. This is a Corona time and I think this time can be more useful for you because at this time we have a lots of time to spend. Some person spend the time in the TV and etc. and some good persons they are doing some effective work just like study and utilize their best time. I am requesting to all of you, please concentrate on your study, focus on your future, and for this there is a one thing that don't waste the time. Then how we can utilize the time? You can utilize the time by doing some intellectual work on online platform. So we are here to provide you best education. My name is RC, as you know. 11th क्लास के चैप्टर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर की स्टडी करेंगे और इसकी बेसिक को समझेंगे. दिस इज द सेट्स. अब इसमें जो फंडामेंटल कैटेगरी है उसको समझते हैं. मैंने इनलिस्ट किया है कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज द सेट, देयर फंडामेंटल इंट्रोडक्शन, देयर डेफिनेशन, इन द definition of sets, and one more thing, elements belong to a set. Then what is the set? Anybody can define it? Yes, some of you can say it is the collection. It is the collection. Yes, it is a collection. But what is the difference between collection and set? Is all collection are the sets or some collection are the sets? And what is the definition of sets in the mathematics? In general terms, if somebody said to you that collection of clothes, collection of ornaments, collection of your you can say books, collection of your playing things, these are all the collections. What is all collection are the sets? Mathematics has a well defined definition of the sets. What is the definition? बहुत से लोग तुम में से ये जानते हैं कि और पढ़ा भी है कि नेचुरल नंबर का सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना. तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं. जैसे मैं कहूं कि भाई लेस देन 10 नेचुरल नंबर लिखने, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 9. दीज आर द नेचुरल नंबर लेस देन 10. यस और नो. फिर मैं कहूंगा कि इसको सेट के फॉर्म में लिखोगे तो कुछ लोग जानते हैं कि हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं यहां पर और लिख देते हैं इनको एलिमेंट्स को. कलेक्शन करने के लिए कलेक्शन को किसी बॉक्स में रखना है ना, तो उस बॉक्स में रख दिया एक तरीके से, ये समझो आप. ओके. फिर मैं कहूँ आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वॉवल्स हैं उनको लिखना है, तो आप लिखोगे ए ई आई ओ यू और इनको कलेक्ट कर दोगे आप. इट इज अ सेट. अब बात आती है कि सारे कलेक्शन सेट हैं क्या. अब जैसे मैं कहूं कि होल नंबर्स को लिखना है तो वो सेट हो जाएगा. सपोज मेरे दिमाग में एक बात आती है कि मैं कलेक्शन करना है मुझे टॉप बैट्समैन क्रिकेटर्स, और उसमें बैट्समैन लेने, बॉलर नहीं लेने, ऑफ इंडिया सपोज, और मुझे लेने हैं सिर्फ 10, काउंटिंग है सिर्फ 10 लेने. और 10 जो बैट्समैन है उनका कलेक्शन मुझे करना है, टॉप 10 लेने, और टॉप 10 को मैं कलेक्ट करने जा रहा हूं. मैं सपोज मुझे सचिन अच्छा लग रहा है, मुझे राहुल द्रविड़ अच्छा लगता है ना. तो अच्छा ऐसा हो सकता है कि तुम्हें सचिन अच्छा नहीं लगता हो, तुम्हें राहुल द्रविड़ अच्छा नहीं लगता हो. इट इज पॉसिबल. मींस टॉप बैट्समैन कैसे डिसाइड करेंगे? कोई रेटिंग एजेंसी डिसाइड करेगी, ऐसा नो.
और रेटिंग एजेंसी में भी तुम कहोगे तो बहुत सारी एजेंसीज होंगी जिनको लगता है कि सचिन की बैटिंग अच्छी थी, लेकिन सचिन से अच्छे प्लेयर भी आ गए, कोहली अच्छा खेलता है, तो कैसे डिसाइड करेंगे? मींस डिसाइड कर ही नहीं पाएंगे. ओके, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कलेक्शन एंड द सेट. कलेक्शन तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन सेट सब कुछ नहीं हो सकता है. मैथमेटिक्स में जो सेट की बेसिक डेफिनेशन है उसको समझना है, तो इसको राइट डाउन करना है हम लोगों को. मैं क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं एंड यू हैव टू राइट इट. ओके, सेट्स. व्हाट इज द सेट? इट इज collection of well defined objects. इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो यही है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स और यू कैन से एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, फर्दर यू कैन से एलिमेंट्स, थिंग्स एंड एटसेट्रा, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग. But it is the collection of well-defined. What is the meaning of well-defined? Meaning of well-defined is this: if somebody asks you that collection of all the vowels, it is well-defined. Either you in India or you in USA or you in China, the vowels will not be changed. Vowels remain same, and they are A, E, I, O, U. If you collect the numbers, or you can say natural number less than 10, then this collection is fixed. Yes or no? But if you collect top batsmen, top singers, okay, then this collection is not fixed. It varies from country to country, or even you can say person to person also. Then what is the basic definition of the sets? The basic definition of set is here. It is a collection of all well-defined objects. Got it? Collection of well-defined. This is underline things. Well-defined objects. Got it? तो ये हम लोगों ने एक फंडामेंटल जो डेफिनेशन थी सेट्स की वो पढ़ ली. और हमने क्या क्या सीखा? What is the difference between sets and collection? तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिख सकता हूँ नोट करके. मुझे एक लाइन यहाँ लिखनी है. Note, you can write down, note it. What is the note? All sets are collection. All sets are collections, but all collections are not sets. Yes or no? Yes. Now further, I want to give some examples here. Some standard sets and their notation. Actually, the definition of set is this: the collection of well-defined objects. If I want to talk about the notation of sets, you can see second heading is the notation of sets. How we can denote a set? Then set can be denoted by a capital letter, means representation of a set. Suppose there is a set of natural number, then it is represented by capital N, and we can write 1, 2, 3, 4. Means you have to take the capital N for the notation of the natural numbers, and for the notation of whole numbers, capital W. Yes or no? And what is the whole numbers? 0, 1, 2, 3. I think all of you get it. And what is the set of the integers represented by I or Z? Set of integer. What is the set of rational number? Q. Yes or no? Q denote the rational number.
what is the representation of irrational number? QC, Q complement. It represents irrational number. Irrational numbers. Then what is the representation of real numbers? As you know, capital R. Core real numbers comes here. Okay. Now one further definition, or you can say concept. This is what is the meaning of belongs to. Belongs to. If objects, or you can say element or things, lies within a set, then you can say this object belongs to this set. For example, if this is a set of A, E, I, O, U, then you can say A belongs to set A, and this is a symbol of belongs. And you can also say that P not belongs to set A, because there is no objects or elements like P in this set A. Got it? Let further an example. Suppose a set capital B is 1, 2, 3, 4, 5. Then we can say that 5 belongs to set B, but 6 does not belongs to set B. Means if write down the symbol this, then this symbol is called the belongs to. It is nothing this like this symbol. And if we cross this symbol, then it is does not belongs to, don't belongs to. You can say means this element is not belongs to, is not belongs to, is not belongs to. I think you can understand basic things of the set. I just repeat all the aspects here once. Okay, what is the set? What is the definition of set, and what is the basic in this first chapter? It is the first set introduction, means what is the set, what is the collection, definition of set. What is the definition? Tell me. It is a collection of well-defined objects. What is the meaning of well-defined? Objects are fixed. Okay, means there is no controversy. Okay, if somebody says that the collection of batsmen of the country and you want to select top batsmen, then it is the point of controversy. Who are the best? Somebody says this batsman is best. Okay, means this scenario varies from person to person. If person is changed, then the top list can be changed. But in the mathematics, set is the collection of well-defined objects. Means if you want to collect natural number, then natural numbers will not change. Yes or no? That's why this is the definition of set. Then further, what is the meaning of belongs to? It is nothing. If a elements is lies within a set, then we can say this elements belongs to the set. Otherwise, this element is not belongs to. This is basic concept of chapter first. And on the basis of this video, you can easily do the exercise 1.1. This is your homework from R.D. Sharma. You can do exercise 1.1. Okay? Thank you.